Good morning, people. Not so elated to announce that I have also become a part of the rat race. Context ahead. Guys, welcome back to this little video. It's 18th of June and I want to talk about something. So let's do it. रुकिए, उससे पहले एक चाय लेके आते हैं. So anyone who knows me personally knows that I have a lot of passions that I love. We can say hobbies, but I consider everything, each one of it as my passion, right? When I never limited myself, and I'm thankful to my parents that never let me limit myself based on anything that they can based on that, right? So right now I'm going down to just check my cycle. Oh, I forgot my tools. So I'll just, I'm the only purpose that I'm making this video is just because that I just felt like making it. So I got my tools and let's go. Mainly I want to remove the carrier of my cycle. मेरा करियर तो कुछ ठिकाना नहीं है, एटलीस्ट साइकिल के करियर का तो कुछ ठिकाना कर सकते हैं ना. Lame joke alert. Much later. Hey, so what's up, people? So this is the next day and Sunday के बाद कुछ वैसा खास shoot नहीं किया था मैंने, and I'm just getting ready to go to office. I was just writing my journal, and the main purpose behind this video is like I never planned to become an engineer, like never. Whatever I'm doing right now, I never planned or I never had a dream, that big old dream, that I'll be an engineer, I'll do some coding sitting behind the desks the entire time and work a 9 to 5 job, taking a tiffin in the morning, and that was my biggest nightmare. It was not a dream. So. But unfortunately today I'm doing the same thing. I'm grateful for what am I doing right now in my life as of now, see. But still it feels that it's not being myself, I'm not being myself working in a stereotypical day job. It just feels so weird waking up in the morning and driving 16 kilometers to the office and coming back in the evening completely exhausted, completely drained out, completely languished for your motivations that you already had in your life before we started working in the 9 to 5s, right? Do what you love. So you know what, I feel like I have actually become a part of the rat race. When I was a kid, I always wanted to do something that, I always have been that person that people always look up to me, that ये बंदा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा लाइफ में और वैसा कुछ. Then when we grew up, life hit, reality hits, and सब कुछ फिर ना stereotypical way में होने लगता है. पहले मुझे बहुत शौक था डांसिंग का. I used to go, I joined an academy back when I was a kid, and I used to do pretty well. जितना भी बर्थडे पार्टीज होता था ना, सबके वहाँ पे मेरा ये फिक्स रहता था कि सिद्धार्थ आएगा डांस करेगा, सिद्धार्थ आएगा डांस करेगा. और वो फिर वो ऐसा नागिन डांस वाला जैसा तैसा डांस नहीं, एक्चुअल डांस वाला डांस. And I used to love contemporary dance form, and it was one of my favorites, and I always wanted to just like I'll be somewhere in the world, touring with someone, and such things I used to dream about. Later when I started growing up and things changed, my interests changed, and but one thing remained constant, that was my love for music. When I was in my 4th standard, I was watching one MTV VMA Awards video of 1997, and there was a performance of Michael Jackson. I'll just attach it somewhere if I have it right now with me. I don't know if I have it or not. So I'll just attach it if I have it. So I just watched that performance, and I was I saw Slash, like Michael Jackson was performing a song, and all of a sudden Slash comes on the stage and he starts just jamming on his guitar like crazily, and everyone is like, oh,
okay. Everyone is like, I was like, dude, who's that guy? Like, what's he playing? I just really want to do this someday, and I just want to do this someday on stage. And since that day till now, it's been, my love for guitar has always been constant, and it has been growing since then. But at that moment of time, I was very much studious, and I was very very good academically. In my academics, I was very good. So my family was not, my grandfather was not up for it कि नहीं यार, ये बंदा पढ़ाई कर ले वो बहुत है, दूसरे में डालेंगे ना तो इसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, तो पढ़ने में अच्छा नहीं रहेगा. So then I just forgot about it, and it just slipped off. But every year, once in a while, I used to like, I want to learn guitar, I want to learn how to play it, I want to learn how to play it and everything like that. But first step between what I loved was academics. Like, academics was something कि अच्छा अगर इसको इसमें डाला तो शायद ख़राब हो जाएगा, शायद अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, या something like that. Then things changed, and when I came in my 12th science, I joined my guitar institute, my music institute, and since then I am playing my guitar. And see, 4th standard का सपना था वो मुझे 12th में मिला, right? एंड उसके पहले का जो जर्नी था वो बहुत अजीब था. 10th में थे हम लोग, 9th हुआ, 10th हुआ. सो 10th में तो सब एग्ज़ाम बोर्ड थे, गुजरात बोर्ड्स एंड एवरीथिंग. 10th में हर एक बच्चे पे प्रेशर रहता है कि अरे बोर्ड्स है. अब तो जो कि ये जो पूरा आकाश बाईजूस एंड दिस IIT JEE नीट स्टफ आ गया बच्चों पे. आई थिंक 7वीं 8वीं से अपने ये जो आजकल के माँ बाप है जो अपने बच्चों को बस अच्छा ही बनना देखना चाहते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर आ गया है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है. हमारे टाइम पे भी था पर वो इतना नहीं था. द पेरेंट्स हु आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू दैट बैकग्राउंड, कि जिन लोगों ने अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट किया हो, वो लोग अपने बच्चों को थोड़ा घसीटते थे कि नहीं बेटा तेरे को तो IIT ही करना है, मतलब दूसरा तो कुछ हम कर ही नहीं सकते जीवन में, IIT ही सर्वत्र है तुम्हारे लिए. तो वैसा होता था बहुत हमारे टाइम पे भी, बट कम, इतना नहीं जितना आज देख रहे हैं. आई सी पीपल, यार बच्चे 7वीं में है, लोग ऐसा बेचारा सुबह 7 बजे सोना है बच्चे को, पर पीछे बिठा के उसको खींच के लेकर जा रहे हैं आकाश बाजू उसकी टी-शर्ट बना के, या फिर रेजोनेंस जैसी टी-शर्ट बना के. आई एम नॉट अगेंस्ट दीज इंस्टीट्यूशंस, आई एम जस्ट अगेंस्ट दिस entire scenario that the society is going through right now, right? So talking about me, so I was in 10th and everything was doing, I was like, मैं आगे जाकर फिजिक्स में BSc करना चाहता था. I wanted to go into the field of applied physics. I loved physics at that moment of time. And what happened was that when 10th I cleared 10th, बहुत अच्छे स्कोर आए थे. एंड उस दौरान भी ऐसा होता कि बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, हम स्कूल में एडमिशन के लिए. आई वांटेड एट दैट मोमेंट, आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एज वेल, लाइक रीडिंग, लिटरेचर, म्यूजिक हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ, राइट? Not because my family had someone belonging to that background, but it's just that they never stopped me from doing it. And since 1st standard to 8th standard, which is a very crucial part of a child's education period, because you learn a lot of things, you adapt a lot of things, and it just goes on. So my mom, and she has worked very hard behind me, like crazily. Like my mom used to prepare papers and she used to take tests and everything like that, but it was never under pressure. So आते हैं फिर से 10th में जब मैं आया तो सब कुछ क्लियर हो गया. वी वर जस्ट अबाउट टू टेक एडमिशन्स इन 11th एंड एवरीथिंग. सो आई वेंट टू माई स्कूल फॉर द एडमिशन्स. दे वर लाइक के अरे यार आपके तो इतने अच्छे मार्क्स हैं, आपके लिए तो साइंस की ही सीट है ऐसा वैसा. एंड अनफॉर्चुनेटली आई टुक साइंस. आई शुड नॉट हैव. आई रिग्रेट इट टुडे. नो, आई डोंट रिग्रेट इट, बट आई जस्ट फील सैड दैट आई जस्ट डिडंट गो इनटू आर्ट्स और लिटरेचर फील्ड. आई शुड हैव गॉन देयर. सो आई टुक साइंस, 11th साइंस, मैथ्स ग्रुप, A group. एंड the admission was done and everything. I was not even sure about कि आगे जाके मेरा फिक्स था ना कि मैं बस मतलब मैथ्स लेते हैं, फिजिक्स तो आएगा ही, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगा ही, मैथ्स से बाद तो मैं चूज़ करना था, मैंने मैथ्स चूज़ कर लिया. एंड आई वाज लाइक ओके आगे जाके अप्लाइड फिजिक्स करेंगे, कैलटेक में जाएंगे, रिसर्च साइंटिस्ट बनेंगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट. बट देन माई फ्रेंड कॉल्स मी अप, वन सो कॉल्ड फ्रेंड हु वंस वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वी कैन से दैट. दोस्त तो आते जाते रहते हैं, लोगों की तो ऐसी ये लगी रहती है ना लाइफ में. So he just called me up, hey bro, there's one institution coming here and are you interested to take admission? I was like, okay bro, what's the institution is for? He's like, भाई IIT के लिए है, JEE के लिए है. और वैसे अगर कोई गुजरात बोर्ड वाले वीडियो देख रहे हैं तो they know that during 2016 उस टाइम पे गुजरात बोर्ड में 11th-12th में सेमेस्टर सिस्टम था. So Sem 1 and 3 were objective type question papers, like board exams में भी objectives आते थे. और Sem 2nd and 4th it were like theoretical paper, मतलब completely जैसे अपना normal paper रहता है वैसा.
एंड उसमें ऐसा था 60-40 परसेंटेज क्राइटेरिया था, 60% बोर्ड 40% JEE रिजल्ट, ऐसा था कुछ. और उस टाइम पे गुजकैट का इतना नहीं था, लाइक इट वॉज इंडिपेंडेंट, लाइक एनी वन हु वॉन्ट्स टू अपीयर फॉर इट कैन अपीयर फॉर इट. इट वॉज नॉट लाइक दैट, बट इट वॉज नॉट कंपल्सरी, बट JEE was very compulsory for those who were seeking admissions into the engineering discipline, right? So after I got a call from him, he's like, भाई आजा, आज लास्ट डे है, तो अपन जाके बात करके आते हैं, फीस भर के एडमिशन ले लेते हैं. I was like, okay. I told my mom, what should we do? Like, I started feeling a FOMO. कि अरे यार सब लोग इतना प्लान कर अपनी ज़िंदगी के लिए, यार मैं कुछ कर ही नहीं रहा, और JEE तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार तो कंपलसरी है. उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं था ना, बिकॉज माई फैमिली डजंट हैव एनीवन हु बिलोंग्स टू द साइंस फील्ड, बिकॉज एवरीवन इज इन सम पब्लिक सेक्टर. माई डैड्स अ लॉयर एंड he just enjoys his work so much. He's so passionate about it. So ठीक है, देख लेंगे क्या है. बोल रहा है तो चलते हैं एडमिशन के लिए. दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, दैट आई शुड नॉट हैव गॉन टू दैट इंस्टीट्यूट फर्स्ट थिंग, बिकॉज आई थिंक दैट मेड मी, लाइक दैट ब्रॉट मी इन अ रेस कि JEE देना है तुमको. I know it was compulsory, but I was never looking at JEE in a way that the people around me or my surroundings made me feel like, नहीं but IIT करो, IIT crack करो, NIT crack करो, IIT crack करो, और फिर वहाँ जाके suicide कर लो हॉस्टल में रहकर, right? 18% IITians commit suicide every year, and this rate is growing as 8.2% every year, like as of 2020, last census that was before pre-COVID, right? And after COVID it has actually increased a lot, right? So this was something. So that was that was a mistake that I think I have made, and I should not have made. But ये गलती हम क्यों करते हैं? ये गलती क्यों हुई मुझसे? ये गलती इसलिए हुई कि जब हम 8th 9th में रहते हैं तो उस दौरान हमको पता ही नहीं होता कि आगे कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है, और हम वो स्ट्रीम चूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उस स्ट्रीम में इंडिविजुअली कौन से डिसिप्लिन हैं जिसमें आप जा सकते हैं, जिसमें अपनी लाइफ बना सकते हैं, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, जिससे आप अपने परिवार को पाल सकते हैं. बिकॉज इन द एंड इट्स ऑल अबाउट पेइंग द बिल्स. इट्स उस दौरान क्या होता था कि इस दौरान नहीं, अभी भी, कि अगर आप देखो तो जब भी 10th में आता है बच्चा तो 9th से उस पर प्रेशर बनता है कि अरे भाई नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स. बेचारे ने बोर्ड्स क्लियर किया, उसको 3 महीने जीने को मिल रहा है, उसमें भी उसके ऊपर प्रेशर है कि बेटा तेरा रिजल्ट जो आएगा उसके हिसाब से हमें स्कूल शॉर्टलिस्ट कर लेनी चाहिए, कि तुझे साइंस लेना है, तुझे डमी स्कूल में जाना है, तुझे IIT जाना है. लेकिन अभी तो फिक्स हो गया ना, 10th खत्म होते कॉमर्स आर्ट्स तो कौन लेता है यार, घंटा कुछ फर्क पड़ेगा उससे. तुम्हें लेना तो साइंस ही है बेटा, या तो बायोलॉजी या तो मैथ्स, या तो बनेगा तुम डॉक्टर, या तो तुम जाओगे NIT IIT, वरना जाना नहीं है, क्योंकि वरना तुम्हारे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है ना. ऐसा 2022 में बहुत कुछ बढ़ गया आई थिंक, एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग, दैट्स द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट. बच्चे को 10th का वैकेशन में रिजल्ट मिला नहीं, उसके पास टाइम है नहीं, उसको पता नहीं क्या करना क्या. बस सब ने किया IIT मैं करूँगा, IIT सब ने किया, नीट मैं दूंगा, नीट सबको देनी है, एंट्रेंस मैं जाऊँगा, IIT में मैं जाऊँगा, NIT में मैं जाऊँगा, बिट्स में मैं जाऊँगा, वेलोर में कहाँ जाना है. बट नो वन स्टेज और नो वन जस्ट स्टैंड्स फॉर अ व्हाइल एट पीस एंड अंडरस्टैंड्स इट कि आगे क्या क्या कर सकते हैं. And that's why I feel the education system is shit, because it doesn't allow you. ये जो education का पूरा circle है, it's a mafia. You start at school, you learn few subjects, you excel in few subjects, but in the end when you score good, your score is only being considered for those 2 particular fields, that science and A group, B group, nothing else. There are very less people nowadays that I find कि वो खुद की मर्जी से BCom like कॉमर्स लेते हैं, खुद की मर्जी से आर्ट्स को तो आज लोग इज्जत से देखते नहीं हैं. I was about to quit my engineering in my second year, but I started scoring good. It started acting as a stimuli, or you can say as a catalyst to complete that reaction of staying there and just rub my ass off and complete 4 years of my B. आज मैं एक 9 से 5 की जॉब में बैठा हूँ जो मुझे कुछ करने के लिए अलाउ नहीं करता, कुछ भी नहीं. I'm not being creative, I'm not being anything, I'm losing on my passions, I'm losing time with my family, and a lot of things are happening, but I just don't love it. I might have, अगर मैं 8th 9th में रहता और मुझे इस बात का एक आइडिया होता कि आगे कौन सी फील्ड्स में जाकर हमारा कितना वास्टनेस है, ठीक है, तो मैं क्या क्या चूज़ कर पाता. See, it's never, I'm not demotivated, right? It's just a general talk, and I'm working on something that specifically targets this area, and I really want this to be successful someday, and one day, and it will be successful in the nearest future. You're watching this video, in the nearest future it will be implemented, it will be there out in the market, and it will bring change in millions of students, of Indian students जिनकी ज़िंदगी बिगड़ रही है इस रेस के चक्कर में. Just an urge, don't be a part of the rat race. Just don't be a part of the rat race. ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें तुम कर सकते हो. You can be a sous chef, you can be a chef, you can start a cafe, you can go into automobile, you can go into writing stuff, you can go into content creation, you can go into a lot of things right now. आज का ज़माना is about skill leverage. You have a specific skill, you have enough leverage, and you just
combined both and you go ahead. ये JEE मतलब ये एंट्रेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट? ये कोई ज़रूरत नहीं है. देर आर इनफ पीपल जो लोग को ये सब पहले से करना है, जो लोग के माँ बाप के प्रेशर पहले से उन पे, वो 5वीं से रेडी है, भाई हम तो JEE करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. I had one of my friend who took a drop for JEE, even though we scored almost similar. I have cracked JEE. Means it's not that I haven't cracked, I'm just speaking. I have cracked those exams, but I just didn't go for it, right? That was not something that I am like, I was not made for it. And So मेरा कहना यही है, ज़िंदगी में जो पसंद आए वो करो. If you have a person around you, जो बच्चा है आपके आसपास जो 7वीं 8वीं में है और उसके माँ बाप उस पर फोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को, मना कर दो. ये लाखों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस एजुकेशन माफिया में, कोई ज़रूरत नहीं है. पूरा कार्टेल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? बच्चे को 7वीं 8वीं में लेट हिम हैव द आइडियाज़ अबाउट डिफरेंट फील्ड्स. उसको अलग अलग एक्सपर्ट से मिलाओ. अपने आपके सर्कल में भी बहुत सारे बच्चे लोग होंगे, या आपके पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो, आपके फ्रेंड्स होंगे जो कॉमर्स कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स है, जो इंजीनियर्स है, जो लॉयर्स है. उनको आपके बच्चों को इंट्रोड्यूस करो, उनसे लेट देम नो कि वो फील्ड्स में क्या चीज़ें हैं. बिकॉज वंस ये 7th 8th 9th में अगर वो उसको जान लेते हैं, 10th में उनके पास क्लैरिटी रहेगी कि आगे जाके मुझे करना क्या है. एंड वन मोर थिंग, इट्स नेवर टू लेट टू चेंज फील्ड्स. One person once told me कि you can only change fields for certain amount of times because then you will never be successful for a particular one thing. But always remember, ये जो हमारी ये सड़ी हुई सोच है ना, वो सिर्फ हमेशा एक ही स्टेटमेंट हमको सिखाती है, अ जैक ऑफ ऑल इज़ अ मास्टर ऑफ नन. लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट था क्या? अ जैक ऑफ ऑल इज़ अ मास्टर ऑफ नन बट इज़ ऑलवेज बेटर देन द मास्टर ऑफ वन. ये जो स्पेसिफिक स्किल और ये जनरल स्किल, इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, राइट? One more thing, if something doesn't make you happy, you just don't need to do it. Trust me, the statement might be very tough for somebody, because someone who comes from a very decent, humble background and they need to put some finance on their table after earning, after doing certain things. I know how hard it can be because I have also faced that situation at a point in my life. That it doesn't mean that I am always in riches. I have also seen rags, I have also seen riches, and I have seen filthy riches, right? So life always plays its course and everything is this time. मैं तो बिलीव करता हूँ भाई, तुम करो या ना करो, होता वही है जो राम चाहता है. Just make sure you are happy the moment wherever you are. Just make sure you're happy. And I can influence people in a very different manner. I can motivate them, because even in the jobs you see, people are dead. People are dead inside. No one is happy. No one is happy. Just show me a person who is happy doing a job. Everyone is doing a compromise. Some or the other, everyone is compromising on their lives. And I just don't, if you are watching this video, I just don't want you or your child. But if you are doing, I can understand, because yes, we have certain responsibilities to take care of, and we have to. So it's nothing bad in that. But if there is a child around you and you see them going through this burden of this education system and stuff, just don't let them burden. I know this is a very long video, but I think this was very very important to listen to. Thank you. अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं हूँ सिद्धार्थ मिश्रा. मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी भी अपने रास्ते ढूंढ रहा हूँ, और मैं इसी रास्ते की खोज में बहुत खुश हूँ. बिकॉज नए नए मोड़ पे नए नए लोग मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, और इसी की वजह से मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं सब कुछ कर पाता हूँ. The only question is, are you happy at this moment? If yes, you have actually made it. Simple. Please, the pursuit of peace is lot more than the pursuit of happiness. You should be peaceful and then happy. If you are happy and not peaceful, it doesn't matter. Pursuit of peace should always be above pursuit of happiness. This is Siddharth Mishra. You're watching my channel, Life's Like Sid. So just let's make this something. And if you like this video and you see some old bummer pressuring their child to live the life they wanted to, so just share this video to them. Over and out. Adios. I love you.